Plant kingdom we did yesterday, and I said plant kingdom include all autotrophic multicellular organisms. That is those which have an ability to carry out photosynthesis. And since they are multicellular, they carry out photosynthesis. They should have membrane-bounded organelle, which can trap sun energy and may convert it into chemical energy of glucose. So for that they have got plastids, which mainly contain chlorophyll. The mode of nutrition is autotrophic. And the plant, I was explaining yesterday, I said plant shows a great diversity. There are plants which are containing of one cell, like diatoms, dinoflagellates and euglenoids, etc., which of course we have classified now in kingdom Protista, but earlier they were included into plant. And multicellular, we are starting from algae, undifferentiated body, simply filamentous body where all the cells are alike, to the most complicated trees which we see around us. The lifespan also, if we talk about, there are lower organisms which may live for only few days, to the higher organisms which like some trees which can survive up to lifespan of about 2000 to 3000 years. If height also we talk about, some of the plants are merely a few millimeters, to some of the trees which are reaching up to the height of 300 meters. Okay? So there are great diversity. Some are flowering, some are only spore producing, some are reproducing by means of fragmentation, very commonly lower plants and all. So on the basis of their mode of nutrition, reproduction, we are classified into two categories, that is the cryptogams and phanerogames. Cryptogams include all the spore producing plant, and phanerogames include all seed producing plants, which we already studied in class 9. Alteration of generation, I already gave you an example, that is when the lifespan is clearly divisible into two distinct phases, a phase which is haploid and a phase which is diploid. Most of the higher plants are diploid and they produce haploid only gametes, and the gametes are short-lived. Within a few hours to few minutes to few hours or even few days, they will fertilize and they will again restore to N condition. Whereas all the lower plants, the cryptogam, cryptogam, that is the Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, they are haploid and they change to diploid phase only after fertilization. So there is diploid phase that is producing spores, and the haploid phase that is producing gametes. So they may have two distinct phases. Okay, like Bryophyte and Pteridophyte even shows two distinct phases. One phase will be haploid and the another phase will be diploid. So about this we will study in detail in plant kingdom chapter 3. The next is kingdom Animalia. Kingdom Animalia जो है, that is what they include all the heterotrophic multicellular organisms which cannot make their own food, so they will lack cell wall, they will lack plastids, and their stored food is always either glycogen or oil. Okay? Plastids are not there, so they are depending on the either plant or on certain animals, which is ultimately depending on plants. So ultimately they are depending on plants. The digestion can take place inside the body, again, because the saprophyte, the bacteria and protists we already separated. So all the animals are having a certain mechanism where they are digesting food into their body. So they may have a cavity, or they may be digesting inside the cell, to the highly evolved human being and other mammals which have well developed alimentary canal, and we already studied about the digestion and absorption in human being. So you are well aware of that is how the holotropic nutrition, holozoic nutrition is taking place. Okay, so that is one thing. The stored food we already talked about, and the holozoic nutrition also. Now another important thing about the animal is given is that they always have a definite shape and size. Okay, unlike plants, plant can reach to any height. Okay, no two plant will be exactly same. You cannot say that the branching take place after this height and the flower will come in this place and the leaf will come in this place. But we have got well defined. We know that the palm will be here, then the finger will be here, and the finger will have these 3 phalanges here in each finger, and all the nails will be there. All these are well defined in case of animals. Most of the animals, you know that what their body shape will be, what their size will be, what their structure will be.
ठीक है, they always share some common structure. So that is very important. Okay, so that is now next is sexual reproduction. Now sexual reproduction, what it is written in the book is something misleading. It is written that the sexual reproduction is by copulation. It is not always. It is not always, because there are several sexual reproducing organisms, but like almost all the animals are sexually reproducing, but many of them are having their fertilization outside the body, that is in the water. So when the fertilization is outside the body, that is in the water, like all the lower organisms are reproducing outside except insects, which are reproducing outside, that is on the leaf and other surface, that is on land. बाकी सब पानी में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. So when they are reproducing in water, certain amphibians also, annelids also, बाकी सब पानी में जाके रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. तो मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. So there is no need of copulation. They will be simply discharging their semen and egg, and after the spawning, the fertilization will be totally depending on chance, and the zygote will be formed, and that will lead to the formation of a new individual by metamorphosis. But in all the higher animals, like starting from amphibian also छोड़ दीजिए, reptiles, birds and mammals, they show copulation. तो वहाँ पे क्या है, the fertilization is internal. तो देखिए, male and female followed by embryological development. Cell feature of this phylum we will be studying in the next chapter, chapter 4. So plant kingdom and animal kingdom, they are so wide, so much of differences are there, that their further classification and then further study of their group, that will be done in chapter 3 and chapter 4 respectively. Now we are talking about the three groups which have found no place in the R.H. Whitaker's classification. There are viruses, there are viroids, and lichens. So virus and viroids are non-cellular bodies. उनकी बॉडी में तो कोई सेल्स ही नहीं होते हैं. तो जब उनमें सेल्स नहीं है, तो हाउ कैन वी पुट देम इन द एनिमल? बिकॉज जब हमने क्लास 9th में चैप्टर 5 पढ़ा था, we have studied, the chapter was the fundamental unit of life. And what was the fundamental unit of life? It was cell. तो cell is must. किसी भी लाइफ के लिए क्या जरूरी है? That is minimum a cell. It is not necessary that they have nucleus, or it is not necessary that they have cell organelle, but cell is must. It may be one cell, it may be many cells. It may be having tissues, it may not have tissue. It may have organ, it may not have organ. But minimum one living cell is required. Without any cell organelle may also chalega. That is, in case of monorins, we have studied that they don't even have a nucleus. They do not have all the membrane bounded organelle. Organelle के नाम पे वहाँ पे क्या है? केवल राइबोसोम्स and centrosomes are there because they do not have any membrane. But है तो virus and viroids are having no cells at all. And since there is no cell, तो हम उनको किस में डालेंगे? हम उनको living being में नहीं डाल सकते. But they even shows. तो we shall talk about virus. Virus तो आजकल बहुत हवा में है. Nowadays we all are afraid of virus, and we are carrying what you call or this shastra. So what everyone is having mask. What is this for? It is not to hide our face. It is not to show some क्या कहते हैं, some showpiece or some decoration. But it is actually a protective measure. And you know, nowadays a special virus, जिसको हमने नाम दिया है coronavirus, is in air, and it is causing a devastation. इतने सारे लोगों को इसने अफेक्ट कर दिया. In India itself, more than 72,000 people have died by so far. ठीक है? And people who are suffering from this is crossed 8 lakh. तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, they are suffering from. वायरस क्या है? देखिए, all of us who have suffered from ill effects of the common cold, that is a flu, know about the virus. Flu is the most common disease. कहीं भी हो जाती है, ठीक है? और फ्लू क्या है? दैट इज़ द कोल्ड एंड कॉफ. थोड़ा सा नाक बहती है, जुकाम हो जाता है, फीवर सा आता है, एंड वी फील अनकम्फर्टेबल. दैट इज़ फ्लू. ठीक है?
तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेज विच वी मे ऑलरेडी अंडरगॉन, दैट इज द चिकन पॉक्स एंड द स्मॉल पॉक्स और रेबीज और हेपेटाइटिस। Okay, so viruses are causing number of diseases. I was talking about, that is the smallpox, chickenpox, measles, rabies, hepatitis, conjunctivitis, common cold and cough, और अब ये जो खास बीमारी निकली है दैट इज कोरोना। ठीक है, तो ये जो कोविड-19, तो ऑल दीज आर द डेंजरस डिजीजेस, बट इंटरेस्टिंगली देयर इज नो मेडिकेशन अवेलेबल फॉर दिस। हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वायरल डिजीजेस के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों नहीं है, दैट विल टॉक अबाउट। तो सी इफ आई रीड फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन से मैं पढ़ता हूँ। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे डू नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, वो लिविंग है ही नहीं। तो फिर क्या, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिविंग एज दीज ऑर्गेनिज्म, देन वी हैव टू they have to have cell, तो इनमें सेल तो है ही नहीं। The virus are non-cellular organism and they are characterized by an inert crystalline structure। आउटसाइड स्ट्रक्चर आपको अगले पेज पे दिख रहे हैं, देयर आर स्ट्रक्चर, ये दिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कोई हेक्सागोनल है एंड सम आर स्पाइरल एंड सम आर समथिंग, ऑल दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो दीज आर कॉल्ड कैप्सूल और स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इनसाइड दैट मे बी अ जेनेटिक मटेरियल विच मे बी RNA और DNA। Now, the most important thing, when they infect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. That is the most important thing. Virus खुद living नहीं है, but उनमें one property मिल रही है, that is of living being. What? That they can reproduce. They can reproduce. If one virus enter in our body, within no span it will multiply into 1 to 2, 4, 8, 16, and they may go in thousands and thousands. ठीक है, एंड दे विल फाइंड द न्यू सेल्स एंड दे विल इन्फेक्ट देम एंड दे विल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई वायरस के लिए। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर ऑल दीज थिंग्स द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल दे आर ड्रॉइंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। सपोज सम वायरस एंटर इन माई बॉडी, मे बी कंजक्टिवाइटिस, आँखों में लग गया। ठीक है, ना वो लगने के बाद क्या, दे विल टेक द मशीनरी ऑफ कंजक्टिवा सेल इनटू देयर कंट्रोल, and whatever raw material is required and whatever type of activities are required, energy required, that they will be drawing from these cells and they will be multiplying their genetic material and they will be multiplying their number. ठीक है, and sometimes they increase in so much and they just take the control of entire cell that the cell itself die. तो यही लिखा है आगे देखिए, killing the whole cell and they would you call the virus as in living? No, it is something like those street people, no, जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो क्या है, किसी को पकड़ लेते हैं and they loot their money and they enjoy their food and all, they are working nowhere। ठीक है, तो वो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास ना कोई अपना घर होता है, ना खाने पीने की कोई चीज़ होती है, ना उनके पास कोई रसोई है जहाँ पे वो कुकिंग करेंगे, ना उनके पास, बट दे आर लिविंग बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन द अदर। ठीक है, द नेम वायरस मीन्स द वेनम और पॉइजनस फ्लूइड एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय लुई पाश्चर। ठीक है, DJ Ivanovsky was the first to recognize certain microbes as causal organisms of mosaic disease in tobacco. If you see the tobacco leaf, you will find certain patterns are formed। ये अगर tobacco leaf है तो you will find this type of patterns। ऐसा तो आपको कई सारे leaves में मिल जाएंगे ऐसे, जैसे कोई कीड़ा रेंग के गया उसके ऊपर, some worm has creeped onto the leaf। तो this type of pattern when we are getting, that is called mosaic। ठीक है, तो ये मोजाइक डिजीज हो जाती है उसको। एंड इसके बाद जो है द नेक्स्ट इज MW Bigeneric। इनने क्या किया, ये जस्ट क्रश्ड दिस लीव, उसने उसका पूरा जूस निकाल लिया एंड व्हेन दैट जूस वाज पुट ऑन टू द अदर लीव तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाता था। ठीक है, और इसके बाद देखिए WM Stanley showed that the virus could be crystalline and crystals can consist of largely protein। अच्छा, ये बिजेनविक ने क्या करा, when he filtered it, तो even those filters which we are using for filtering bacteria, इससे हो सकता है बैक्टीरिया फिल्टर हो जाए, पर अगर इसमें से वायरस जाएगा तो वायरस आप बाहर निकल सकता है, बिकॉज द वायरस आर फाइनर देन द बैक्टीरिया, मच स्मॉलर, बिकॉज दे आर नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर।
सो दे कैन ईजिली पास। तो ये मत सोचिए कि मास्क आपका वायरस को बचा लेगा, बट द ओनली थिंग, अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे तो वायरस कैन इमीडिएटली एंटर इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इमीडिएटली एंटर इन योर नोज और माउथ, बट व्हेन यू आर हैविंग दिस तो दे विल ट्रैप देयर एंड सिंस दे डू नॉट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। अब हमको इतनी जोर से तो सांस लेते नहीं है कि सक्शन में उनको खींच के अंदर ले लेंगे। Our body, our respiratory system is working as a respiratory system, not as a vacuum cleaner machine, which एकदम vacuum create करके सारी चीज़ को अंदर खींच लें। Okay, now next क्या लिखा है? In addition to the protein, virus also have genetic material in the form of DNA और RNA, either DNA और RNA, दोनों चीज़ें कभी भी नहीं होती है, ठीक है। एंड बोथ DNA and RNA हैज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एज वेल एज देयर सेल्फ रिप्लिकेशन। वो अपने आप से अपने नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। तो व्हेनेवर वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी, whenever virus enters in our body, they leave their protein outside, only DNA goes inside or RNA, whatever, and they will add their DNA or their RNA will make DNA and that will be added with the DNA of our system, our body, and then they will take control of our body, और फिर वो हमारी बॉडी से जो भी उनको चाहिए वो बनाएंगे। So whatever type of their requirement is there, that they can make out of using these type of genetic material, and soon they will multiply RNA or DNA and then protein coat from our own ribosomes will be made and new viruses are made, ठीक है। We are lucky that most of the virus after finishing their one cycle they go out of the body in search of the next body. So most of the viral diseases have their own course of disease, the span in for which they make us sick, ठीक है। हमने देखा मोस्ट ऑफ देम आर फॉर 2 weeks, सम ऑफ देम आर फॉर 5 days। हम कहते हैं कि जुकाम है आप दवाई लो तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, विदाउट मेडिसिन यू विल बी क्योर्ड इन 1 week टाइम। सो इवन if you take medicine, if you do not take medicine, you will be cured in 7 days. Now why medicines are not effective in case of viruses? Because virus do not have their own system, they are using our system. So that means if we are taking medicine, we will have to stop our own system, which is not possible. हमको थोड़ी मरना है, हमको वायरस को मारना है, लेकिन वायरस के पास खुद का कुछ सिस्टम ही नहीं है। So ultimately we are taking any medicine, that means we are using those medicine on our own body, and that is why it is not possible. तो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं, viruses causes disease like mumps and smallpox, herpes and influenza, AIDS, ठीक है, ये सारे। और प्लांट्स के अंदर भी जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस हमने पढ़ा है ना। नाउ नेक्स्ट इज वायरॉइड। वायरॉइड क्या है? इस वर्ड को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, वायरस डिवॉइड ऑफ प्रोटीन। OID स्टैंड फॉर डिवॉइड and VIR stand for virus। तो वायरस डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, मतलब ये और भी छोटे हैं वायरस से भी, दे आर मच स्मॉलर देन द वायरस एंड दे आर हैविंग ओनली एंड ओनली RNA, नॉट इवन DNA एंड नो प्रोटीन, ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं है उनके ऊपर। सो इट इज एन इन्फेक्शियस RNA। So whenever they come in contact with any of the host body, they will go and they will multiply, they will cause disease and they will be ready for infection into the other। तो देखते क्या लिखा, वायरॉइड। इन 1971 T.O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than the virus and caused potato spindle tuber disease, and it was found to be free RNA, कोई प्रोटीन ही नहीं है। In case of virus, we have RNA or DNA as a genetic material and a protein coat on it. It does not even have a protein coat. So they will multiply much faster, है ना, and they will be using less machinery. उनको तो अपनी बॉडी में केवल RNA को मल्टीप्लाई करना है। So they will be using only a certain amount of energy and amino acids and take control of our genetic material plus their ribosomes, ठीक है। तो ये इनका सिस्टम है। तो इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA एंड इट लैक्स द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरस, हेंस द नेम वायरॉइड, वायरस डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो मच लोअर देन दैट। तो इसको तो उनसे ये दिस कैन इवन बी पास थ्रू दोज सब्सटेंसेज विच वी आर यूजिंग टू फिल्टर वायरस, ये उनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है।
Okay, now come to lichens. I got 4 minutes time in which I complete lichens. Lichens क्या होते हैं? Symbiotic organisms हैं. Symbiotic. ठीक है? Now what is sym? Sym means together. S-Y-M. Okay, together. And bio means life, living. So actually क्या it is? A relationship between members of two different species. और ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, म्यूचुअल रिलेशन या इंटरडिपेंडेंस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे. अब इसका एग्जांपल हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? लाइकेन. नाउ व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज अ सॉर्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन which is found in on the tree trunk of certain place plants जो कि जनरली मॉइस्ट जगहों पे मिलते हैं. ठीक है? सो लाइकेन हैज 2 पार्टनर्स. एक फाइकोबाइंड्स रहेंगे और एक माइक्रोबाइंड्स. वर्ड माइक्रोबाइंड यूज किया था हमने परसों की क्लास में. That is fungal partner. And phyco word plant के यूज करते हैं. तो फोटोसिंथेटिक पार्ट. Lichen is a category of symbiotic organisms which are having 2 type of things. That is, they are having some cyanobacteria, blue green algae which are able to, that is वो algae है जिनमें photosynthesis की capability मिल रही है और उनके साथ जाके ये जुड़ गए. कौन? fungi. So now fungi and plants are living together, algae living together. तो उससे क्या फायदा होगा? वो छोटे थे, क्लास शायद 1 और 2 में हमारे एक कविता होती थी पत्ता ढेला. ठीक है? कि वो पत्ता इतना हल्का होता है कि हवा में उड़ जाता है. ढेला ऐसा होता है बारिश पानी गिरेगा तो वो डिजॉल्व हो जाएगा. सो दे लिव्ड इन अ पार्टनरशिप कि जब भी तूफान आएगा तो मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाना तो पत्ता उड़ेगा नहीं, और जब भी बारिश आएगी तो पत्ता उसके ऊपर आ जाएगा और उसको बारिश में गीला नहीं होने देगा. दे आर ऑल्सो डूइंग दैट सेम थिंग. The phycobind, they will carry out photosynthesis. So they require only water and minerals. Minerals वो खुद नहीं ला पा रहे हैं. So for minerals they are dependent on fungus. So fungus by secretion of some enzymes and all, they dissolve the minerals from the rocks and they will avail it to algal partner, photosynthetic partner. Photosynthetic partner will use water and minerals and कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड सनलाइट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. खुद अपना रख लेगा थोड़ा बहुत इसको दे देगा. तो दोनों मिल करके अपनी ज़िंदगी निकालते हैं. तो जहाँ पे देयर इज नो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक लिविंग ह्यूमस इज देयर, दुनिया में ऐसी जगह पे वे ह्यूमस का नामो निशान नहीं है, वहाँ सबसे पहले कौन पहुँचते हैं? ह्यूमस, लाइकेंस पहुँचते हैं. लाइकेंस आर दोज ऑर्गन विच डज नॉट रिक्वायर ह्यूमस. ऑल अदर प्लांट्स जो है विच वी सी हियर, हमको उनको खाद डालनी पड़ती है, गोबर की खाद या किसी भी डिकम्पोस्ट मतलब कंपोस्ट खाद, इनको नहीं देना है. तो सपोज ए वल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस, लावा वाज देयर, लावा कूल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 20-30 ईयर्स में लावा कूल होकर के क्या रॉक्स में चेंज हो गई. दैट रॉक डज नॉट हैव एनी ह्यूमस इन इट. तो ये रहेंगे सबसे पहले, दीज विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स which will reach there and the microbiome will dissolve the minerals and absorb the humidity from air and pass it to the phycobind, and phycobinds will carry out photosynthesis and keep some energy for themselves and other energy too they will be passing to the same.
ठीक है. So this is how they will be living together. Lichens are very important, and their importance all the more increases when we have studied about the chapter 2 in class 10, acid base, and there we have studied the lichens are the organic indicators. ठीक है. So they were producing the universal इंडिकेटर्स, और उसको यूज़ करके हम किसी भी जगह पे मिलने वाले एसिड या बेसिक कंडीशंस को पता कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल, और चैप्टर इज ओवर, एंड टुमारो विल डू द क्वेश्चन आंसर, एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द 17th चैप्टर.